अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन और इनका स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आसिफ कुरैशी, आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम Satyanarayana book of Biochemistry. So amino acids are obviously we know they are the building blocks of proteins and they are organic compounds, they are carbon containing compounds and they have two specific functional groups. और वो जो functional groups हैं उनके नाम हैं amino group and carboxyl group. amino group को हम represent करते हैं NH2 symbol से और carboxylic group मतलब COOH. यानी if you look at the general structure of an amino acid, so there is a central carbon जिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है और इस पर्टिकुलर केस में इसी कार्बन पर अमाइनो ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है और दोनों फंक्शनल ग्रुप्स इस एक कार्बन पे लगे हुए हैं। बाय द वे ऐसे अमाइनो एसिड को जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर लगे हों उस कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द अल्फा अमीनो एसिड्स एज वेल। सो बहरहाल दिस इज द जनरल फार्मूला एंड हियर इफ यू सी दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अमीनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ एन आयन। ये नॉन आयोनिक स्ट्रक्चर है बिकॉज यू डोंट सी एनी चार्जेस हियर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं दिख रहा, बट हियर यू सी चार्जेस। इट्स अ नेगेटिव चार्ज, इसका हाइड्रोजन निकल गया और इस अमाइनो ग्रुप पे आके लग गया है। सो दिस इज नाउ अ पोलर कंपाउंड, सो दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट एज एन आयोनिक फॉर्म। अच्छा, अब ये R क्या चीज है? R बेसिकली स्टैंड्स फॉर द x नंबर ऑफ कार्बन एटम, सो दैट्स बेसिकली अ साइड चेन। और ये इसमें दो कार्बन भी हो सकते हैं, इसमें एक कार्बन भी हो सकता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर विल बी कि देयर विल डेफिनेटली बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, there will definitely be an amino group और अगर ये मौजूद हैं कार्बन के साथ attached then that compound is known as amino acid. The amino acids are termed alpha amino acids if both carboxyl as well as amino group are attached on the same carbon. So ये functional group और ये functional group दोनों इसी कार्बन पर attached हैं तो इसको हम नाम देते हैं alpha amino acid. Okay? Right, so the alpha carbon binds to a side chain जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया जिसको हम R कहते हैं. It is different in all 20 amino acids that we will discuss. बाज़ हम amino acid देखेंगे जिसमें R is just simply replaced by hydrogen. बाज़ देखेंगे जिसमें there is one carbon instead of R. In the others there will be 2, 3, 4 and this R will depend on कि which amino acid are we talking about. उस हिसाब से इसमें number of carbons होंगे. The amino acids mostly exist in the ionized form और वो ionized form मैंने आपको यहाँ बताई कि there will be hydrogen removed from the carboxylic acid and added to the ammonia functional group. Okay. Now, optical isomerism. If a carbon is attached to 4 different groups, so for example, इस डायग्राम में अगर आप देखो या किसी भी डायग्राम में भी हम देखते हैं, so there is one, ये कार्बन है सेंट्रल अल्फा कार्बन जिसपे एक वैलेंसी पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, दूसरी वैलेंसी पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक वैलेंसी पर कोई और, यानी एक कार्बन दो कार्बन डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा अमीनो एसिड है, आर चेन डिफर करेगी. सो ये सारे डिफरेंट तरह के मोलिकुलर अटैचमेंट्स हैं इस कार्बन के साथ बिकॉज दे आर ऑल डिफरेंट. इनकी ऑप्टिकल एसिमेट्री होगी, दे आर देयरफॉर कॉल्ड द एसिमेट्रिक कार्बन्स जिन पर चारों तरफ अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं एंड देयरफॉर देयर इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सेम कॉन्सेप्ट हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिस्कस किया था. नाउ द अमीनो एसिड एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन possess 4 distinct groups: R, which is the alkyl chain, hydrogen, carboxylic acid का COO negative charge and amino group से NH3. So ये चारों अलग अलग चीजें हैं. So these are all of them are different. ग्लाइसिन की एग्जांपल इन्होंने इसलिए दी, ग्लाइसिन में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, so अलग से कोई अल्काइल रेडिकल नहीं होता. ठीक है. The structures of L and D amino acids are written based on the configuration of the L and D glyceraldehyde. So if you look at the diagram, L glyceraldehyde का ये structure है जिसमें left side पे OH group है और D glyceraldehyde में right side पे है OH group. यहाँ पर पे OH group को replace कर दिया है NOH और the functional group other one is the carboxylic acid. If the NH2, the amino group is on the left side, it's an L amino acid. If on the right side, it is the D amino acid. So it's basically based on the glyceraldehyde configuration. Now, amino acids are classified. That's an important topic because बहुत ज़्यादा ये exams में पूछते हैं और viva में भी, written में भी. It's a favorite question of examiners. A simple question like how do you classify amino acid can have multiple answers because you can classify amino acids based on, for example, their structure, based on their function, based on so many other properties. So the first heading we have to talk about is the amino acid classification based on their structure.
A comprehensive classification of amino acid is based on their structure and their chemical nature. Each amino acid is assigned by 3 letter or 1 letter symbol. यानी ग्लाइसिन है, उसके लिए हम वर्ड GLY यूज करते हैं. So this is a 3 letter word. अभी हम देखेंगे तमाम amino acids के लिए. These symbols are commonly used to represent the amino acid in the protein structure. The 20 amino acid found in the proteins are divided into 7 distinct groups. और वो भी groups हम देखते हैं. Table 4.1, the different groups of amino acids, their symbols and their structures are given. So let's have a look. Actually, to me, this is a super important table. And when I say super important, it means कि exam में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके पूरे clinical career में it is going to be very important. तो 7 ग्रुप्स में we have टोटल 20 अमीनो एसिड्स जिनका हमें जिक्र करना है. मैं ये नहीं कह रहा कि होते ही दुनिया में 20 अमीनो एसिड्स हैं. देयर आर मोर अमीनो एसिड्स बट दीज 20 आर वेरी रेलिवेंट बिकॉज दे आर फाउंड इन प्रोटीन्स इन योर बॉडी. सो ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, जिसमें पहला ग्रुप है अमीनो एसिड्स विद एलिफेरिक साइड चेन्स. नाउ एलिफेरिक साइड चेन का मतलब ये है कि देयर विल नॉट बी एनी डबल बॉन्ड इन देयर, या कोई और इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा. सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल, ओनली कार्बन कंटेनिंग चेन्स. और इन अमीनो एसिड्स के नाम हैं ग्लाइसिन. रिमेंबर ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, देन एलिनिन, देन वेलाइन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन. सो many people give you mnemonics कि इसको याद रखने का तरीका ये है कि G for कोई चीज़ बता देंगे, A for, but you know I am not a mnemonics guy because mnemonics इतने सारे हो जाते हैं मेडिसिन में at the end of the day कि mnemonics को याद रखने के लिए mnemonics याद रखने पड़ते हैं कि ये mnemonic किस चीज़ का था, ये mnemonic किस चीज़ का था. So I'm not a very guy. I'm not a guy who is very much interested in mnemonics. So just try to spend some time with the table. Try to remember the categories. The first category is the amino acid with aliphatic side chain. Now aliphatic side chain will all be composed of carbon, no other functional group, and they are single bonds. The simplest one is glycine. अगर मैं इस हाइड्रोजन को छुपा दूं यहाँ से तो ये जनरल फार्मूला तो आपको पता है तमाम अमीनो एसिड में होगा. तो दैट्स द इजी बेट जो आपको याद रखने में आसानी होगी कि अगर मैं ये पिंक वाली चीज़ छुपा दूं, पिंक वाली चीज़ बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है आर को. अगर मैं ये पिंक वाली चीज़ छुपा दूं तो बाकी सारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर एक जैसा है, पीछे जो चीज़ बच गई वो बिल्कुल एक जैसी है. आप देख लेना, ये फार्मूला था ना हमारे पास, दैट वाज द फार्मूला. सो इस फार्मूले में देयर वाज अ सेंट्रल कार्बन. Here is the central carbon. एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ, एक तरफ अमाइनो लगा हुआ, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अल्काइल ग्रुप. अब ये अगर अल्काइल ग्रुप हम हटा दें तो बाकी सारा पीछे ये जो स्ट्रक्चर बचता है तमाम अमीनो एसिड्स में एक जैसा है. एंड बिकॉज इट एग्जिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द आयोनिक फॉर्म, सो दिस इज मोर रेलिवेंट स्ट्रक्चर. सो वी हैव COO माइनस चार्ज, NH3 प्लस चार्ज. ओके, सो एंड यू कैन सी दिस हियर कि ये बिट इस अमीनो एसिड का जिसका नाम ग्लाइसिन है और ये बिट इस अमीनो एसिड का जिसका नाम एलिनिन है सेम है, और ये सेम है वेलाइन से, ये सेम है ल्यूसीन से, ये सेम है आइसोल्यूसीन से. नो डिफरेंस एट ऑल, एग्जैक्टली द सेम थिंग. लेकिन ये जो आर यहाँ लगा हुआ था, अगर इस आर की जगह सिंपल एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और साथ में ये पूरा अमीनो एसिड के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सो आर को अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा इट इज ग्लाइसिन. आर को अगर 1 कार्बन स्ट्रक्चर यानी CH3 रिप्लेस करेगा तो एलिनिन. और इसकी सारी थ्योरी आई होप आपको पता है कि CH3 क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ CH3. ये बेसिकली इस तरह है कि देखो ये कार्बन है और इस कार्बन की 4 वैलेंसीज है ना, 1 2 3 और 4. हर कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं जिसमें उसको बॉन्ड बनाने हैं. अब ये कार्बन एक तरफ तो इसके साथ है COO माइनस क्योंकि ये अमीनो एसिड है, दूसरी तरफ है NH3 प्लस क्योंकि ये अमीनो एसिड है, एक तरफ है हाइड्रोजन. अब ये जो बच गया, अगर यहाँ हाइड्रोजन अटैच होता है तो ये अमीनो एसिड बन गया ग्लाइसिन. लेकिन अगर यहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, एक और कार्बन अटैच हो जाता है तो अब ये बन गया एलिनिन. अच्छा, जब एक और कार्बन अटैच होगा तो इस कार्बन की भी तो 4 वैलेंसीज होंगी, 1 2 3 और चौथी तो कार्बन के साथ लगी हुई है. अब ये जो कार्बन है इसकी बाकी की वैलेंसीज, जो वैलेंसीज बच जाती हैं वो हाइड्रोजन फिल करता है, तो ये CH3 बन गया. सो इफ द अल्काइल ग्रुप इज CH3 देन इट बिकम्स, यू सी द अल्काइल ग्रुप हियर इज CH3, नाउ इट बिकम्स एलिनिन. अगर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा कार्बन लगते हैं, 3 कार्बन देखें ब्रांच फॉर्म में 1 2 and 3 कार्बन आते हैं, दिस इज वेलाइन. और अगर इससे ज्यादा कार्बन लगते हैं, 4 कार्बन 1 2 3 and 4, देन इट इज कॉल्ड ल्यूसीन. एंड इफ देयर आर 4 कार्बन इन अ डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, सो 3 कार्बन इस तरफ है, एक ब्रांच इस तरफ निकली हुई है इसमें भी 4 कार्बन, दैट बिकम्स आइसोल्यूसीन. ल्यूसीन के जैसा isoleucine. So this is how, just by changing the pink thing is representing R. Okay, so if this side chain is changing,
by different number of carbons, the amino acid is changing. Okay, और हर amino acid का आप देख रहे हैं कि there is a 3-letter word and then there is a symbol. So glycine के लिए for example GLY यूज करते हैं और G यूज करते हैं. Alanine के लिए ALA और A, valine के लिए VAL और V, leucine के लिए LEU and L, and isoleucine के लिए ILE and I. And now if you closely look, ये जो मैंने आपको पहला ग्रुप कराया है, आई टोल्ड यू देयर आर 7 ग्रुप्स. सो जो पहला ग्रुप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अमीनो एसिड का, इसमें जो साइड चेन है वो एलिफैटिक है. एलिफैटिक मतलब दीज आर ऑल प्योरली बेस्ड ऑन कार्बन एंड देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड्स. सो ये देख रहे हैं आप, सब में सिंगल बॉन्ड्स हैं. नाउ देयर आर 3 अमीनो एसिड्स हियर जिनमें जो साइड चेन है यानी कि जो R है वो ब्रांच्ड है. सो इफ यू लुक हियर देयर इज ओनली 1 कार्बन, सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांचिंग. बट इफ यू लुक हियर दिस इज द ब्रांच, ये ब्रांच हो रहा है. दिस इज द ब्रांच हियर, this is the branch here. So these are branch chain amino acids. So remember, valine, leucine and isoleucine are branch chain. इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. जब हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे तो इनका ब्रेकडाउन डिफरेंट तरीके से होता है. Okay, so that is the first group of amino acid which contains aliphatic side chains, और इसमें 5 तरह के amino acids हैं. So remember the name, remember the structure. It's easy. You just have to spend some time on it. Then this is the group number 2, second group. These are the amino acids which contain OH groups. और इसमें टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं? Only 3. serine, threonine and tyrosine. TYR. और अब चूंकि थ्रियोनिन को T से रिप्रेजेंट कर दिया तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं T के बाद नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड क्या है? Y. So this is represented by Y. serine is represented by S या फिर 3-letter word SER. और अगेन देखें ये स्ट्रक्चर तमाम अमीनो एसिड्स जैसा है, सिर्फ R में डिफरेंस है. R में सीरीन में देयर इज अ कार्बन एटम बाउंड टू OH ग्रुप, और OH होगा इसीलिए तो हम ये अलग कैटेगरी पढ़ रहे हैं. देयर आर 2 कार्बन एटम एंड 1 OH ग्रुप. और टायरोसिन का स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में. सो मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज वेरी वेरी हाई यील्ड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स, बट आई थिंक यू शुड नो द बेसिक स्ट्रक्चर्स. थर्ड ग्रुप है सल्फर कंटेनिंग. सो पहला वाला था एलिफेरिक साइड चेन्स, दूसरी कैटेगरी है अमीनो एसिड की जिसमें OH ग्रुप है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर. इसमें भी 3 अमीनो एसिड्स हैं, सिस्टीन और मिथायोनिन. इनफैक्ट 2 ही हैं. सिस्टीन is the amino acid जिसमें जो general amino acid का formula है, plus there is a sulfhydryl group and there is a disulfide bond in cysteine category. So this is cysteine या cysteine, ये अलग अलग दोनों के नाम इस तरह लिए जाते हैं. If there is only SH group which is sulfhydryl group, it is particularly called cysteine. और अगर disulfide bond है इस तरह से तो it is called cysteine. And if there is thioether bond, so if there is an ether bond involved, then this is called methionine. ये वाला पार्ट सबका देखें भाई एक जैसा. इट्स ऑल अबाउट द R. ओके. चौथा ग्रुप है अमीनो एसिड्स विच आर एसिडिक इन नेचर. उनके नाम में एसिड आ रहा है ज्यादातर के. एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एंड देन इनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं. एस्पार्टिक एसिड से एस्पाराजीन, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन. दीज आर देयर 3-letter words and these are their symbols. Some of them are not straightforward. So for example, aspartic acid is not A, okay, it's G. Asparagine is not A, it is N. Glutamic acid is E. So all of them are very different. आपको अगर इस तरह याद रखोगे कि जो पहला वर्ड है वही होगा, ऐसा नहीं चलता. इनमें भी ये पार्ट सारा देखें सबका सेम है. सो दिस पार्ट इन ऑल द अमीनो एसिड्स आर ऑल द सेम. इट्स ऑल अबाउट द R जो कि डिफरेंट है. इफ देयर इज बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप इट्स एस्पार्टिक एसिड. If there is an amide group, यानी कि ketone involved हो गया, this is asparagine. If there is gamma carboxyl group, then glutamic acid and amide form of the same is called glutamine. अब 5वीं कैटेगरी है जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं. सो लाइजीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, टिपिकली बेसिक अमीनो एसिड्स. ओके. सो इनके स्ट्रक्चर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट इफ यू कैन रिमेंबर दैट्स अ गुड थिंग. दैट इज सेम इन ऑल ऑफ देम. That pink bit is different. Then the 6th category is aromatic. Aromatic मतलब इनमें rings हैं, phenyl, alanine, tyrosine and trip. So इनका जो R group है, देखिए ये वाला bit फिर same है सबका. All the amino acids have this bit same. There is a carbon group, there is a carboxylic acid group, and there is an amino group. That's always the same thing. R यानी जो इनका function ये side chain है, if this contains 1 carbon attached to a ring which is a hexagon, it's called phenylalanine. If there is 1 carbon hexagon and then an OH group, then it is tyrosine. If there is 1 pentagon and 1 hexagon attached to 1 carbon, it's tryptophan.
Okay, and then the last category is the amino acid, not the amino acid. That's an interesting one. Example इसकी है प्रोलीन. और यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा. जितने 19 अभी हमने अमाइनो एसिड डिस्कस किए हैं, उन 19 के 19 अमाइनो एसिड का ये वाला ग्रुप बिल्कुल सेम था कि यहाँ पर देयर वाज अ कार्बन, देन देयर वाज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, देन देयर वाज एन अमाइनो ग्रुप, है ना. लेकिन यहाँ देखें ऐसा आपको नहीं दिख रहा. So that's a little different. Therefore, it is called amino acid. So if you don't see this configuration, rather see this configuration, that is proline. Okay. So ये 20 amino acids का मेरा ये ख्याल है कि इसको एकदम रट्टा लगाना इतना आसान भी नहीं है. लेकिन अगर आप थोड़ी अटेंशन के साथ, से फॉर एग्जांपल आप 10-15 मिनट इस पूरी टेबल पर लगाते हो, देन यू विल बी फाइन. और अगर आप मेरी वीडियो साथ साथ देख रहे हो, देन आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट व्हाट इज रिटन. लेकिन आपको ये सारे नाम यार याद होने चाहिए. एग्जाम में ना ये बड़ा हॉट शॉट क्वेश्चन होता है कि एसिडिक अमीनो एसिड के नाम बताओ, बेसिक अमीनो एसिड के नाम बताओ, उन अमीनो एसिड्स के नाम बताओ जिनमें ब्रांच्ड चेन, साइड चेन मौजूद है. सो ये आपको याद होने चाहिए. ओके. Now, amino acid with, अब ये वही सातों ग्रुप हैं. ग्रुप नंबर 1 amino acid with aliphatic side chain. Group number 2 containing hydroxyl group. Group number 3 is sulfur containing. Group 4 is acidic amino acid. Group 5 is basic amino acid. Then aromatic and then amino acid. ओके. इन सब की फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं. यहाँ इसकी एग्जांपल में प्रोलीन आ जाएगा. अमाइनो एसिड विच हैव द एरोमेटिक रिंग्स आर फिनाइल एलानिन ट्रिप्टोफेन टायरोसिन. बेसिक अमीनो एसिड्स में वी टॉक्ड अबाउट इट, अर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन. एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन एंड aspartic acid and asparagine. Okay, so all the discussion that we had in this particular table is kind of summarized in words here. All right. Now, so that was classification just based on one particular category. So this was based on the structure. You remember I told you that there are so many different ways of classifying amino acid. That was number 1. Classification based on the structure. कि R functional group क्या है, इस पर बेस करके सारे अमीनो एसिड्स क्लासीफाई हो रहे थे. एक और तरीक़ेकार है अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करने का, and that's based on the polarity. So there are non-polar amino acids and there are polar amino acids. Okay, non-polar amino acids are also referred as hydrophobic. They are water-hating. They have no charge on their R group. The amino acids included in this group are alanine, leucine, valine. You have to remember the names. Again, you will find a lot of mnemonics on YouTube and so many other places. But I am not a mnemonic person, so you have to remember them if you are studying with me. Then polar amino acids are the ones carry no charge in the R group. They however possess groups such as hydroxyl group or sulfhydryl group or amide group. तो अब आपको पता होना चाहिए OH containing amino acid कौन से हैं, sulfhydryl containing amino acid कौन से हैं, और उनकी examples आपको अगर पता है, glycine, serine, threonine, cysteine, glutamine, asparagine. So they are all considered as polar amino acids and they are not water hating. Then there are polar amino acids with positive side chain. 3 amino acids आते हैं इसमें, lysine, arginine and histidine. And then there is a negative जिसमें acids हैं, glutamic acid है, basically aspartic acid. And then there is another classification of amino acid which is called the nutritional classification. So first classification I told you was based on the structure. The second classification is based on the polarity. Are they polar, non-polar? And then the third one is nutritional. The 20 amino acids are required for synthesis of variety of proteins beside their biological function. However, all 20 need not to be taken in the diet. Based on the nutritional requirement, amino acids are grouped into 2 classes. Either they are called essential amino acids or non-essential amino acids. So essential amino acids are the ones which actually cannot be synthesized in the body and you have to essentially take in your diet. So you have to take them in the diet. They have to be supplied through the diet. और आपको उनकी examples पता होनी चाहिए. Arginine, valine, histidine, isoleucine, all of them are written here. You need to ratify them. You need to remember them. The 2 amino acids, namely arginine and histidine, can be synthesized by the adults and not by the growing children. So these are called semi-essential because some of us can make it, some of us cannot make it. So semi-essential. अच्छा, non-essential वो हैं which are synthesized in the body, so they are not essential in your diet. आपको लाजमी खाने में नहीं लेनी, और ये इनकी examples हैं, ठीक है? Then there is another classification of amino acid which is based on their metabolic fate.
Now, carbon skeleton होता है तमाम amino acid में. It serves as a precursor for synthesis of either glucose or fats or maybe both. Now, there are amino acids which give glucose are called glucogenic amino acid, which produce fat are known as ketogenic amino acid. Glucogenic amino acids include alanine, aspartate, so remember them. And fat-producing amino acids are basically leucine and lysine. These two only. Now, glycogenic and ketogenic amino acids, the 4 amino acid isoleucine, phenylalanine, tryptophan, and tyrosine are precursor for synthesis of glucose as well as fat. So, 3 कैटेगरीज हैं. कुछ वो अमीनो एसिड्स हैं जो सिर्फ ग्लूकोज बनाएंगे, दे आर कॉल्ड ग्लूकोजेनिक. कुछ वो हैं जो सिर्फ फैट्स बनाएंगे, दे आर कॉल्ड कीटोजेनिक. कुछ वो हैं जो भाई दोनों बनाएंगे, जो ग्लाइकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी हैं. सो दीज आर लाइक वाओ टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स. नाउ 20 अमीनो एसिड्स का हमेशा हर जगह जिक्र होता है. मैं कभी स्टूडेंट्स अक्सर पूछता हूँ कि यार 21st अमीनो एसिड का पता है, तो दे गो लाइक ब्लैंक. लेकिन आपको पता होना चाहिए बिकॉज आप पढ़ रहे हैं डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के साथ. सो एस 20 अमीनो एसिड्स यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, दे आर फाउंड इन द प्रोटीन. इन recent years, a 21st amino acid named selenocysteine has been identified. It is found that active site for certain enzyme, example glutathione peroxidase, glycine reductase, and 5' deiodinase, thyroidoxin reductase. ये सारे enzymes जो हैं, these are sort of related with this newly added to the fleet amino acid. Selenocysteine is an unusual amino acid containing the trace element selenium in place of sulfur of cysteine. So cysteine के structure में, there was a sulfur, but now here we have selenium. So that's why it's a kind of modified version of cysteine called selenocysteine. Incorporation of selenocysteine into the protein during translation is carried out by codon, namely UGA. ये codon sequence है जो selenocysteine बनाता. It is interesting to note that UGA is normally a stop codon that terminates the protein biosynthesis. So there are some start codon, for example, AUG is a start codon, and then there are some stop codons. जैसे कि UAG is one of the stop codon, another one is UAA or UGA. So these are, UGA is under discussion here. ये codon आएगा तो protein synthesis stop हो जाएगी. That's why it is called a stop codon. Another unique feature that selenocysteine is enzymatically generated from serine directly on the transfer RNA and then incorporated. So that's something जो जब आप translation पढ़ेंगे तब बात आएगी. But the point is कि you should know कि in addition to 20 amino acid there is a new one, selenocysteine. ऐसी चीजें पता होती हैं तो you kind of, you sound cool in front of the examiners and also in front of your friends. Now, pyrrolysine, the 22nd amino acid, but there is a question mark. So many people argue about this, so I'm not going to go into the details of pyrrolysine. But that one, selenocysteine, is very much established, okay, as 21st amino acid. Now, some of the properties of amino acid. Now, this is something which is not too high yield, बहुत ज़्यादा important नहीं है. Guys, let me tell you, I cannot emphasize enough that how important is this table. This is super duper important table. मैंने लिखा भी है super important. So आपको classification of amino acid based on their structure, based on their polarity, based on their essentiality and non-essentiality, based on their glucose making capacity or fat making capacity. That is super important. So अगर इस पूरी वीडियो में, if you have to remember one thing, I would say that is the classification of amino acids. So remember the classification and structure. Properties और physical and chemical reactions में थोड़ा बहुत झोल आ जाए, लोचा चलेगा, लेकिन classification और structure of amino acid में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. Okay. Now, amino acids differ in their physicochemical properties, which ultimately determine the characteristics. There are some physical characteristics such as solubility. Most of them are usually soluble in water. Their melting points are usually very high, about above 200 degrees centigrade, which is too high. Taste-wise, amino acid may be sweet, such as glycine, valine, alanine. Tasteless, such as leucine or bitter. Okay. Monosodium glutamate, ये अक्सर आपने सुना होगा ना, अजीनोमोटो चाइनीज खानों में डालते हैं अक्सर लोग, is used as a flavoring agent in food industry and Chinese foods to increase the taste and flavor. In some individuals, tolerance to this particular Ajinomoto, Chinese restaurant syndrome is observed. यानी, oh my god, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या खा रहे हैं, sort of thing. Optical properties of amino acids, they are all the amino acids are optically active. They have optical isomers except for glycine. Glycine का मसला ये है कि इसमें एक कार्बन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, और बाकी दोनों तरफ तो यार हाइड्रोजन ही लगा हुआ है ना. सो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी सब हैं. ठीक है. एम्फोलाइट्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एसिडिक ग्रुप एज वेल एज बेसिक ग्रुप.
and they can donate a proton and accept a proton, यानी अपना ही प्रोटॉन डोनेट होके इसी पे आ जाएगा. तभी तो ये मैंने ऊपर एक डायग्राम आपको बताई थी और ये बात हमारी हुई भी थी कि when they exist in an ionic form, तो ये आयनिक फॉर्म कैसे बनी, ये जरा देखें ना, इसको गौर से जरा देखें, इसको समझने की कोशिश करें. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये निकला और अपने ही बेसिक ग्रुप पे आ गया. सो इसमें से चूंकि हाइड्रोजन निकल गया इट बिकम्स नेगेटिव, इसमें चूंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया इट बिकम्स पॉजिटिव. सो ऐसे कंपाउंड को हम एक अलग नाम देते हैं. देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही तो ब्यूटी है, बहुत सारे नाम हैं जो आपको समझने हैं, याद रखने हैं, बट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड. इस पर्टिकुलर केस में वी कॉल देम एम्फोलाइट्स. Okay, now Zwitter or dipolar, the name zwitterine is derived from the German word which means hybrid. Zwitterine is a hybrid molecule containing positive as well as negative ionic groups, है ना. There is a COO minus and NH3 plus, so that is called a zwitterine, right? Now the amino acids rarely exist in neutral form. With free carboxylic acid and free amino group, they usually appear in the body. They are present in ionic form, like NH3 plus and COO minus. Okay. Isoelectric pH is defined as the pH at which the molecule exists as zwitterine. इस वक्त सिर्फ इतना याद रख लें कि वो pH जिस पर positive और negative charges in a compound remain in equilibrium is known as the isoelectric pH. इससे ज़्यादा डिटेल जब isoelectric points डिस्कस करेंगे तब बात आएगी. Titration of amino acid, that's not an important topic for you to discuss right now because ये lab based चीज़ है, we are not going to discuss that at all. Let's jump on to some of the chemical properties which are important, most of them are not. The general reactions of amino acids are mostly due to presence of two functional group. कौन कौन से दो हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा अमाइनो ग्रुप है, और इसका हाइड्रोजन भी यहाँ चला जाता है तो ये COO माइनस बन जाता है और ये NH3 प्लस बन जाता है. सो ये दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इन्हीं की वजह से सारा रिएक्शन है. वो रिएक्शंस जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से होते हैं वो हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ से H निकल गया और इसकी जगह आके अगर सोडियम लग गया तो इट मेक्स अ सॉल्ट बेसिकली, है ना. अमाइनो एसिड फॉर्म सॉल्ट्स विद बेसिस एंड दे आल्सो मेक ईस्टर. अगर ये हाइड्रोजन निकल गया और कोई साइड चेन कार्बन के आगे लग गई सो इट बिकम्स ईस्टर. ईस्टर तब बनेगा जब इसका रिएक्शन अल्कोहल्स के साथ होगा और सॉल्ट तब बनेगा जब इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ होगा. एंड दैट्स अगेन, मैं कहने को तो कह गया, समझना भी आसान है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप and here we have a base, NaOH is a base. So the reaction will yield, इसका जो ये सोडियम है which is usually positive, तो ये यहाँ जाकर के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलेगा और वाटर बना देगा और ये सोडियम इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर COONA, तो ये बन गया सॉल्ट. तो सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिएक्ट्स विद द बेस. Salt is produced when the carboxylic acid group react with the base and it makes an ester when it reacts with an alcohol. अब ये रिएक्शन भी जरा समझ लो ताकि फिर आप ये ना कहें कि सर जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दी. मैं ये समझ रहा हूँ, ये आपने सब पढ़ा हुआ इंटर में ना, तो आपको ये चीज़ें पता है. सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड नाउ सपोज वी हैव एन अल्कोहल, ROH is the alcohol. Now this can be ethyl alcohol with 2 carbon, propyl alcohol with 3 carbon, butyl alcohol with 4 pentyl hexyl heptyl, ये चलता रहेगा. सो R लिख देते हैं. तो होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा, इस OH के साथ मिलेगा एंड दे विल जनरेट लिबरेट वाटर, और ये जो R है यहाँ के इस जगह पे फिक्स हो जाएगा, सो COOR बन जाएगा एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ईस्टर. सो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पहला रिएक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. दूसरा रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन. इसमें ये होगा कि अमाइंस बनेंगे. सो यू सी हियर this COO group is being replaced. ये निकल रहा है in the form of carbon dioxide. Because carbon dioxide निकल रही है, it is called decarboxylation. Okay, and it produces amines such as बहुत important amines बनते हैं जो neurotransmitters के तौर पे use भी होते हैं. This carboxylic acid group can also react with ammonia and it produce its amide. So aspartic acid, for example, reacts with ammonia, forms asparagine. Same for the production of glutamine. तो ये सारे important reactions हैं यार. और there are some reactions which are also because of the amino group. So these were the 3 reactions which were because of the carboxylic acid group. Now we are talking about reactions because of the amino group. And these amino groups behave as bases and they combine with acids such as HCl to form ammonium chloride type of thing. So reaction with ninhydrin.
The amino group reacts, but that's actually not important, so just leave that one. Color reaction of amino acids, not important. Transamination, super important. Transfer of an amino group from an amino acid to a keto acid to form a new amino acid. We will talk about the great deal. मैं 3-4-5 स्टार इस पे बना देता हूँ, because ये transamination liver में बहुत important process है. Basically एक amino acid दूसरे amino acid में convert हो जाता है. And then there is oxidative deamination. ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम मेटाबॉलिज्म इन लिवर पढ़ रहे होंगे. सो पॉइंट ये है कि जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर केमिकली सुपर एक्टिव. इनका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी रिएक्ट करता है बॉडी में और अमीनो ग्रुप भी रिएक्ट करता है. नाउ 20 अमीनो एसिड्स के अलावा और या 21 अमीनो एसिड्स के अलावा और जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड. सो दे आर नॉट टेकिंग पार्ट एक्टिवली इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, बट ये नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं. दे are amino acid derivatives in proteins. The 20 standard amino acids can be incorporated into the protein. ये standard कहलाते हैं. Some of these amino acids undergo specific modification. Not something that we are going to discuss right now. Collagen. Now here you go. Is the most abundant one in mammals, containing 4-hydroxyproline and 5-hydroxyproline. देखो बात यह है कि some of the standard proteins undergo modifications to produce certain other type of thing which you may call as non-standard amino acids, but they are very important for some function such as structure. जो पूरे का पूरा collagen बनता है वो modified protein से बनता है. So there are some specific modifications in the protein synthesis and standard amino acids से हटके. So proline is for example a standard amino acid, लेकिन 4-hydroxyproline में इसको convert करते हैं और 5-hydroxyproline में and it makes collagen, जो आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ में इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल इसी तरह गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन इज फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिस्टाइन्स. सो you get non-standard amino acid by modification of the standard amino acids. Okay, and some of them are also important drugs and antibiotics such as D-penicillamine. It's routinely used ना, बहुत सारी चीजों में यूज होती है, such as Wilson disease की therapy. N-acetylcysteine, that is an important antioxidant also used in cystic fibrosis. Gabapentin, anticonvulsant है. So there are some amino acids which are also used as drug treatments. Okay. A selected list of important non-protein amino acid along with their function. So these are all non-protein, not incorporated in the protein, but they have some other functions in the body. अभी इस टेबल को पार्क करें, जब पूरा प्रोटीन का सेक्शन खत्म होगा probably तब हम इसको एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे. ठीक है. So that's it. मैं अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पे इस चैप्टर को रोक रहा हूँ, and then in the next video we will talk about the structure of proteins themselves. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.